अंतिम विषय पे आता हूं, ये लैंड एक्विजिशन का। एक प्रचार चला कि ये किसान विरोधी है और कॉरपोरेट्स की मदद करता है। जब एक्ट बना, श्री जयराम रमेश यहां पर मौजूद हैं, तो आपकी सरकार ने उस एक्ट में एक सेक्शन डाला, सेक्शन 105। उस सेक्शन के तहत आपने एक शेड्यूल क्रिएट किया, शेड्यूल 4। इन दैट शेड्यूल 4 यू पुट 13 pieces of legislation including national highways, railways, etc., coal, atomic energy, for which land is required. और आपने 13 पर्पसेस को एग्जेम्प्टेड पर्पसेस मान लिया। उन एग्जेम्प्टेड पर्पसेस में ना तो कंसेंट चाहिए, ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए, और ना वो राइट टू फूड वाला कंसिडरेशन होगा। आपने कंसेंट हटा दी, कंसेंट हटा दी। आपके कानून में 13 पर्पसेस ऐसे हैं वेयर दीज थ्री थिंग्स इंक्लूडिंग कंसेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स द ओरिजिनल एक्ट। फिर ये कहा कि 1 साल के बाद इन एक्ट्स में केवल मुआवजा बढ़ा दीजिए। व्हाट डिड वी डू? 1 साल के अंदर। I'm glad Jairam is correcting me, because on these facts we are not in dispute. There will be one fact on which you and I will be seriously in dispute. आपने कहा कि 1 साल के भीतर इसको बढ़ा दीजिए। हमने उन 13 के 13 एक्ट्स में कहा कि अगर लैंड एक्वायर होगी, you will have to pay twice plus twice silesium, which is 4 times plus R&R. So we increased it. So admittedly it's a pro-farmer step that we increase compensation in those 13 acts. Now those 13, so that the whole country becomes revenue deficit like Kerala and West Bengal. If your amendments are accepted, the whole country will be revenue deficit then. Well, I have just told you what has happened as a result of your policies. They are paying for it as a result of the legacy you left behind. So the 13 areas, admittedly no consent is required under the UPA Act, no SIA is required, no food security consideration is required. Total amendment का जो नेट है, जो 13 की सूची थी उसमें 5 और जुड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से विनती करता हूं, आप हमसे कई ज्यादा पावर में रहे। यू हैव बीन इन पावर 5-7 times more than us. Don't create an environment in this country where 2 words, infrastructure and industry, become bad words. And that is what you are doing. Please allow me to complete. आज सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपको इंडस्ट्री क्रिएट करने की जरूरत है। Now, which are these 5 purposes? The first purpose is, and that is where your act was defective, it was against India's interest, national security and defense. जयराम जी ने जब ये एक्ट बनाया, he put defense and security as a urgency purpose, but forgot to put it as an exempted purpose. So as a result, if Government of India needs land for defense installations, for nuclear installations, हमें पहले यह बताना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए चाहिए, कहां पे चाहिए, फिर वहां लोगों की पब्लिक इकट्ठी करके उसके 70% लोगों से साइन करवाना पड़ेगा, फिर उन लोगों से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा,
फिर 5 साल में अगर वो इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हुई तो उसके साथ खेत बनाने पड़ेंगे और पाकिस्तान को पूरी सूचना देनी पड़ेगी कि यहां पे हमारी इंस्टॉलेशंस लगी हुई हैं बाय दिस ईयर। इट वाज अ डिफेक्टिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इट वाज अगेंस्ट इंडियाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट हैड टू बी करेक्टेड। एंड आई वुड अर्ज यू टू दोज इन योर गवर्नमेंट who have handled security, Antony Saab is here, the disastrous consequences of following this act, and the act says social impact assessment, right to food shall apply when land is required for security and defense. Exempted purpose नहीं रखा, ये कहा कि mandatory purpose के लिए चाहिए होगा। तो हमारे दोस्त संजय राउत जी जो सबसे ज्यादा, हमसे भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद के साथ ये कहां खिलवाड़ करता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लें। सर प्लीज वेट, आई विल आस्क माय फ्रेंड, डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। आई विल आस्क माय कॉलीग श्री मनोहर पारेकर जी to come with the files and show them to Antony Saab and Dr. Manmohan Singh ji, because they are both aware of it, where our strategic installations have been held up because of this bill. Shame. And you want to simply say, oh, we will give them an image, they are anti-farmer, pro-farmer, the country can suffer in the process. Now this is the first purpose. The second purpose, rural infrastructure. And here I have a serious complaint about my friend Jairam Ramesh. जिस दिन ये कानून पास हो रहा था, हम लोगों ने इशू उठाया कि इस देश में किसानों का क्या होगा, हाउ विल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कम, अब सिंचाई की योजना कैसे आएगी। आपने हमें कहा कि मैं सिंचाई के लिए इसको अमेंड कर देता हूं, वापस लोकसभा जाऊंगा, सिंचाई विल बिकम एग्जेम्प्टेड। मैंने आपका पारित कानून देखा, मैं अपना बहुत बड़ी भूल मानता हूं कि मैंने उस वक्त सीरियसली एग्जामिन नहीं किया। इरिगेशन इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड पर्पस, डिस्पाइट द अश्योरेंस गिवन टू दिस हाउस। एंड आई आस्क्ड माय कॉलीग सुषमा जी, हु वाज द लीडर इन द अदर हाउस, वी वर ऑल टोल्ड एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस हाउस वाज टोल्ड दैट इरिगेशन इज बीइंग एग्जेम्प्टेड। ऑल यू डिड टू इरिगेशन वाज कि जिस इरिगेशन प्रोजेक्ट में स्टेट में एसआईए हो चुका है, वहां सेंटर में एसआईए की जरूरत नहीं होगी। दैट्स ऑल यू डिड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भूल जाइए, उसको जमीन नहीं मिलेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जमीन नहीं मिलेगी। और शरद यादव जी और बहन मायावती जी कह रहे हैं कॉर्पोरेट की मदद कर रहे हैं। इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स, गरीबों के लिए मकान, ये कॉर्पोरेट की मदद है। हाउ डू यू गेट लैंड फॉर दीज पर्पसेस? आपका इंदिरा आवास योजना। तीसरा पर्पस क्या है? किसी बिल्डर और कॉर्पोरेट की मदद के लिए बड़े मकान नहीं, हाउसिंग फॉर पुअर एंड हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा जो 800 फुट से छोटा होता है, वो बिल्डर नहीं बनाते, वो सरकार की जिम्मेवारी है बनाना। आज 65% लोग जो देहात में रहते हैं, उनमें से जो एस्पिरेशनल हैं वो शहर में आना चाहते हैं। शहरों के आसपास छोटे शहर बन रहे हैं, छोटे घर उनके बनते हैं। आर वी गोइंग टू पुट दैट टू अ स्टैंड स्टिल? हाउ विल यू गेट लैंड फॉर दैट? और ये सारे रूरल एरियाज के लोग हैं जो अर्बन माइग्रेशन से आएंगे। शहर के लोगों के पास तो अक्सर घर है ही है। अर्बन पीपल हैव हाउसेस, गुड और बैड। इज द रूरल माइग्रेशन फॉर विच यू नीड हाउसिंग फॉर पुअर। आज पूरा 15% शेयर है जीडीपी का। द शेयर ऑफ जीडीपी of agriculture is 15% and 60% population shares that 15%. तो 60% लोग 15% पैसे को शेयर कर रहे हैं। तो आज आपको 20-30% लोगों को एग्रीकल्चर से निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रही है। अगले 20 साल का ये चुनौती है।
आप तो आनंद जी ट्रेड मिनिस्टर रहे हैं इस देश के इतने साल तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सबसे ज्यादा किसी के भाषण होंगे तो आपके होंगे, और किसी देश के व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को कहेंगे निवेश कर, उद्योग लगा, रोजगार दे, पर जमीन के लिए पहले 70% की कंसेंट ला, फिर ये सारी प्रक्रिया होगी, उसके बाद देखेंगे तुझे जमीन मिलती है कि नहीं मिलती। Are we reaching a stage where industry becomes a bad word? And the last one is infrastructure. Infrastructure where land continues to be owned by the government. अब शहरों में तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछड़े इलाकों में ज्यादा बनना है, तो उनको पिछड़ा रहने दे। Mr. Deputy Chairman, this debate is not between rich and poor, or farmer or non-farmer. This is between adding to the poverty of India and making India poor for the next few decades. May I just take leave? I read a very interesting document. And this document, if I am permitted to read, I can even place it on the table. This was sent to the Honorable Prime Minister at that time in 2012. It says, and I quote, Prime Minister's urgent attention is drawn to the serious concerns raised by the industry on the Land Acquisition, Rehabilitation, Resettlement Bill 2011, recommended by the Parliamentary Standing Committee. The bill in its present state will have adverse long-term implications on manufacturing, industrialization and urbanization in India, and will be key impediment in operationalization of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor project, creation of national investment and manufacturing zone. Since most of the major infrastructure projects are today being implemented on a PPP basis, it is imperative to broaden the definition of public purpose to include development of NIMZ and industrial townships under this project. The bill envisages exclusion of PPP projects and industrial townships and has certain provisions which will not only make the cost of land exorbitantly high, but also make acquisition proceedings willy-nilly impossible. The insistence of consent of 80% of affected families will seriously delay acquisition and in many cases halt infrastructure projects. It has been stipulated that urgency clause cannot be invoked for industrial townships, expressways, highways, NIMZs, which would lead to delay in land availability for infrastructure projects. The imposition of 100% solatium over and above a multiplier of 2 will lead to cost spiral impact on land prices. While the bill was under examination by the Parliamentary Standing Committee, the department had taken these issues up on such and such date. I had also written to the chairperson of the committee and given a detailed representation. However, the concerns of the ministry have not been addressed in finalization of the report, which was tabled in Parliament. A legislation of this nature in the present shape will render key infrastructure projects unviable, slow down the process of urbanization completely. The coming years will see an increased demand for robust urban infrastructure and development of urban townships, which can fuel the next wave of economic growth. Prime Minister would like to take a call. It says everything that I am trying to say. The author of this document is sitting here, Mr. Anand Sharma. Now, the other day you got up and said you are anti-farmer because you are doing this. When this law was being framed, this is what the UPA ministers had to tell the Prime Minister. I still stand by this. That was a well-considered recommendation which Jairam and my government was fully aware of. Because these are national projects, national initiatives, whether the DMIC or the NIMS and the National Investment Manufacturing Zones or the industrial townships. That's very, very clear. The only concern which we have is that the social infrastructure, the definition is not becoming clear, and also opening a door for the private sector
that is questionable, that if you will allow, the private sector, state cannot acquire for the private sector, that's the issue. It's not the job of the state to acquire for the private sector, whether for private hospitals or for private universities. That is not the headache of the states. This is, we may come out with various explanations now, but at the end of the day, if I take Mr. Sharma's explanation, then henceforth we'll only find nationalized industries running businesses in India, because there can't be land given to a private sector. I only urge you. All right, sir. I think the bill will come in sir. This bill is about acquisition of land. Okay. Yes, please. All right. Sir, may I? No. All right. No. Provision in any law of any country for acquisition to transfer to the private sector. Okay. That is written in the Parliamentary Standing Committee report. Manish Shankar, you and your time. Sir. Yeah, please. Okay, silence. Okay, please. Yes, sir. Sir. Sure, please. Please. Two interventions took place. My friend Jairam and I have discussed this in the past also, you'll remember. I'll never reproduce our conversations, but I'm aware of his argument and I'm also aware of the response I gave. He says, buy the land and build on it. So if you want to set up an industry in India, buy agricultural land and set up an industry. My response then was that agricultural land can't become industrial land. It's the state to decide whether to convert the user or not. If instead of planned development, it may be, the land itself may not be agricultural land, it may be wasteland. Or further land. If the only way of setting up industry in India is first buy land from the farmer, then go to the chief minister with a change of land user, we have seen what has happened in the last several years. Then CLU will be the only industry left in this country. You know it. You just have to drive across into Gurgaon and you'll know what happened in that state. The state survived only on one industry, which was the CLU, change of land user industry. And you want to institutionalize it. You want to institutionalize it. And Mr. Manishankar Iyer, I'm grateful he permitted me for the last 45 minutes to speak and came, it was only in the end. He said, don't acquire it, let people buy it. There's a difference. I of course know the difference. But your 13 exempted acts, Mr. Iyer, are all acquisition acts. They are not buying acts. You can exempt 13 acts from consent. You can exempt 13 acts from SIA. The moment rural infrastructure is added, housing for poor is added, the whole thing becomes anti-farmer. Housing, the moment irrigation is added, it becomes anti-farmer. And therefore, this entire misguided debate at some stage must come to an end. The issue is, do we want this country to grow or not, or do we want all investments to be diverted into other countries? Mr. Anand Sharma's experience is far more than mine, and I stand fully in support of the proposal that Mr. Sharma gave to the Prime Minister. It is my regret that Mr. Jairam Ramesh was more persuasive and he managed to persuade the Prime Minister. That's all I have to say.